A very good evening to everyone present here. It is truly a matter of immense pride and joy for me to welcome you all to this very insightful 81st online interactive section, which is also the 61st Leadership Development Program by Corporate Mentor. I extend my heartfelt greetings to the esteemed honorable guest speaker for the day, Mr. Karan Kumar sir, Honorable Chairman Professor BP Singh sir, Honorable Senior Professor Ajay Kumar Singh sir, Honorable Director of the College Professor Dr. Mahesh Sharma sir, respected Director Dr. R.S. Singh sir, respected faculty members and my dear fellow students. I, Danu Pandey, a student of VBA at DSPSR, batch 2024 to 2028, feel deeply honored to stand before you today at distinguished session hosted by the Delhi School of Professional Studies and Research, an institution renowned for this commitment to academic excellence, industry integration, and holistic student of development. Today's session is yet another step in our journey of learning and growth, where classrooms extend beyond textbooks and real world leaders, inspire us with their vision and experience. Let us embrace this moment with curiosity and enthusiasm. To commence the session on an auspicious note, let us now take part in the symbolic ritual of lighting the virtual lamp. This, this act represents the removal of darkness and the ushering in the wisdom and enlightenment. May this flame of knowledge guide to us toward clarity, confidence, and success in these days ahead. Now, I request Arun sir to kindly play the virtual lamp lighting video. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. It is my great honor to welcome our distinguished speaker for today, Mr. Karan Sharma sir, who is currently serving as the head of the product development and customer support as Manacle Technologies. Mr. Karan Sharma sir is a visionary leader who excels at solving customer problems with innovation and skill. He has successfully created a scalable high-performing product for his company and is known for aligning his strong teams to work with discipline, quality, and efficiency. Mr. Karan Sharma sir has deep expertise in product management, like development, ERP integration, and team leadership. He has worked extremely in the integration of company product with Oracle, NetSuite, Busy, Tally, and multiple vendor ERPs, demonstrating his ability to blend technical depth with business acumen. His professional skill span PHP, level, HTML, CSS, MQSQL, Query database management, product roadmap, and allied development, making him a well-rounded leader in technology and product innovation. Above all, he is a passionate about continuous learning and self-improvement, a quality that makes him an inspiring role model for all of us. Sir, we are truly honored to have you with us today. Your journey and insights will inspire students to think innovatively, embrace leadership, and prepare themselves for the challenge of the future. Let us welcome Mr. Karan Sharma sir with a big round of the applause as he takes us on our journey into the world of product development, technology, and customer-centered innovation. We are equally privileged to have our moderator today, Mr. Tanisha, a BCA student of batch 2025 to 2029 at DSPSR. On behalf of DSPSR, I warmly welcome you, Ms. Tanisha. Thank you so much for the warm welcome, Ms. Tanu. We are truly honored to have you, sir, here in this 81st online interactive session. I must say your session is going to be very interactive.
not only for students but for all the audience that are present here. To make this session more interactive for our students, I would now like to ask you, sir, some questions based on student development and career growth. No issue. You can start. Okay. Sir, what inspired you to pursue a career in technology and product development? Basically, my journey started in 2019. Uh, on that moment, my senior, Mr. Bhupender Nath Pandey, he asked me to start my career in the language of PHP or in the tele development. But after that, my just senior is Ankush sir. Then he will say me that Karan, start your career in PHP and so on in the Laravel. On that moment I will scared that I don't think I will code and I will do the development in any kind of technology. But later on, slowly I will work on the PHP and somehow in the Laravel. And then I will my based on or my the interest in I basically in database. Like I love to code in the database or like to write the procedure or something else. In all about in the database I know about. After my college, I only know about the database. After that, he will learn me and he will guide me that learn in the PHP and the Laravel. And then after 3 or 6 months, he left the company. And after that, the responsibilities and all of the burdens, must say burden or must say the opportunity that I grabbed. After that, I will check the MCell product. We have a MCell product in the company around 10 years back. I have experience in my company 7 years, and on that moment, everyone is creating a separate instance for every company. Like we have a 150 customer, then we have a 150 instances in our virtual machine or in our pipeline or in the server, cloud server. But we need to deploy a one instance. It will take more than a 1 day. Like clients come across to Manacle and said, "We need your product." Okay, then deal is done. After that, we will deliver the our product within a 1 day. That is a huge time, because in the background we need to create a separate pipeline, separate database, separate code instance, and we have deploy these all of the things in 1 day. This is the our best target. Or if somehow it was delay, then it will take 2 days or 3 days. It will hamper our business. Then my senior and I, or my colleague member, Mr. Rohit, we will sit down and find the solution. We will need, I think, we will took around 1 week, and we will get back the one solution that we will make a multi-instance product of our MCell. Then there no anyone can come on our website and register this. This is my the company, and he do the payment of that product, or he can take the trial for the 15 days or the 20 days or 25 days. He can book that. After that, in the background, the separate database not need to be deployed, not need to be deployed that any code, any file, the single file that is not be created. We make the multi-instance MCell product where only 15 minutes any BBA student or any 10th class person who little bit knowledge about the computer, he will fill the form, basic form of the company scenarios, like company name, company size, what about the company do, and company title. He can just enter that details within a 15 minutes. Within a maximum 15 minutes or 20 minutes, he will get the system. And after that, the company got the mail that your portal or the application is ready. Now you can start your work or the business. So the problem is to create an instance in 2 days, we will cut down and settle down in the 15 minutes. Now we will move to the another product, MEDU. That is our second product, which is only for the colleges purposes. And third one is we have Citizen Connect, that is only for the citizens purpose, like NDMC, New Delhi Municipal Corporation. We heard about that, right?
there are 5 lakhs of people which is using our application from the last 6 years. Okay. They never feel about any speed related issue, any about any concern, and we got the best app in the municipal corporation and awarded by Mr. PM sir Narendra Modi ji. Last 2 years back, we got the certificate or the like of award for the best application in the municipal corporation. We work on the only on the products. Based on some companies ask us to customize these things in our product, then we can do. Our main monopoly is that we will customize anything. So can you explain in detail what does that application do? Just describe about the application No so issue. that all of us can understand how technology works. Like MCell is basically working on the FMCG companies or beverages companies. FMCG companies like Haldiram, Baidyanath, they No, have no, 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 a no. I'm talking of the application for which you got award from the Prime Minister Citizen of Connect. India. Okay, Now, can you Citizen describe Connect. in That detail? application name is Citizen See, Connect. basically, let's go to a sequence. Okay. The input side, the throughput side, and the output side, and the flowback of output to input side. In these four blocks, if you can explain that application, how would that look like for which you got the award from PMO? Okay. Basically, there's a lots of problem in municipal corporation. I will explain about some problems. Then will comes on the solution we will develop for that. Okay. There's a multiple of problems or the services like of potholes, like of garbage related issues, like of Hmm. basically death certificate issues, like Hmm. the citizen has to come there, go to the NDMC office for the birth certificate. He will apply Hmm. the form and submit in this any window or any substantial door or anywhere. He can apply that form. After the 15 days or 20 days, he will get the notification or the through the message or the email that your certificate is ready. And after that, he will also go in the NDMC environment and he will go apply the certificate renewal or the download certificate. There is the staff who will print that document and give it to him. After somehow he need some correction or some lost that he lost his birth certificate of child. After that, same procedure will go on or same cycle will work. After we will observe that and we will acknowledge that problem, we will develop application where only citizen have to apply their form on the mobile application or the website. What is the name of that app? Citizen Connect. Citizen Connect, Citizen Con. we name as Citizen Connect, but when we upload on the Play Store, there's a name as NDMC 311 because 311 is the non-governance emergency number Okay. specified by the NDMC because there's a NDA sign between us So that we you do have not you have upload the Citizen Connect hold name. on, slow. So you have developed an app which is NDMC 311, Correct, where I can go there and I can demand for a birth certificate. I can apply for a death certificate of any of my relatives. I can complain about garbage. I can complain correct. about potholes, and then that gets logged in. That complaint logged in, and there's a automatrix which we developed where the complaint situated in with the latitude or longitude. We will identify that this complaint is go come from the basically civil lines or Okay. the RML hospital. What a There what a is what a a place it garbage. is. Where is the we will capture the image also. Citizen has to capture the image and Yes, I know. GPS image. yes, GPS image. He will Hmm. capture the image and write what is facing the problem. That's it. There's a 2 steps and submit their complaint. After that, matrix will come where officers or the गार्बेज जो सर्वेयर होते हैं बेसिकली जो उनके भी है. पास वो कंप्लेंट्स जाती हैं वो एक मैट्रिक्स के थ्रू जाती हैं जहां पर latitude longitude circle there's a NDMC boundary we created the geofence right so there's a 3 layers department category of the complaint which we identify from the image with the help of AI with the Acha, integrate with that the is done by AI. yes
And which machine learning tool you use for AI for that? Machine learning tool we are not using right now. We are only Then how integrate does with the it learn open on chat, itself? open AI with integrated with our system to identify the image which category is lie for the particular image, right? आफ्टर दैट जो भी सर्कल का उस ऑफिसर के पास असाइन होगी वो एक ऑफिसर के पास जाएगी. इफ एवरी कंप्लेंट हैज अ एस्केलेशन मैट्रिक्स, like garbage rated complaints has to resolve within a 24 hours. If the complaints not resolved in the 24 hours, It gets that complaint escalated. automatic escalated to his senior, then his Hmm. senior, then his senior. It will end on the commissioner level. Hmm. And every week, NDMC commissioner will look out on the our application and monitor all the grievances system with the 311 application. Hmm. Every week there is a meeting and suggest to the officer that do this thing or do this thing, like to solve the problems within a SLA time. Okay. So you have created escalation matrix with SLAs. Yes. Now, then why still there is such a big garbage problem in Delhi? Like in Delhi, NDMC like एरिया की मैं बात करूं तो शायद वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं है, बट दिल्ली में हो सकता है बिकॉज देयर इज अ They are not your ज्यूडिशियल clients. एरियाज. करेक्ट. And DMC has a client, so they don't have a problem. Yes. Delhi basically is under on the MCD. When the MCD give us to the tender, then will I think garbage related problem will not increases. Got it, got it, got it. Okay. So it's basically a workflow management system which you have Correct. created for them, and you have converted that into utility which everybody can use. Yes. And Also, the citizen how can. many users do you have? We have a NDMC officer, have a 2000 officer using our application, and more than 4.5 lakhs user citizens. Population. Yes, your population which is using our application. 4.5 lakhs is registered civilians we have. So Delhi's population is 10 crores, correct? Yes. If I'm not wrong. Yes, might be. So in 10 crore, 4.5 lakh, what have Manacle done to increase the penetration? Because 4.5 lakh is very less compared to 10 crores. Basically, we have a contract with the or we have a tender only of the NDMC, but NDMC population is 5 lakh. Delhi So population NDMC is 10 population is crores. 5 lakh only. Correct. Rest of the population is other. Yes, they are is in the MCD or SDMC. Got it, got it, got it. Okay, Also, we are working on the Faridabad also. okay. Yes. Also in Ajmer. Very interesting, very interesting. Okay, over to you, Tanisha. Thank you, sir. Can you first discover your interest in solving customer problems and turning them into product innovation? Tanisha, can you repeat please? Your voice Yes. is so slow. How did you first discover your interest in solving customer problems and turning them into product innovations? Like when I started or when You I started, I'm not getting your point. when you started, I'm how did starting in 2019, and okay. I lead my team in 2022. Okay. As students, we often struggle with teamwork. What advice would you give us for managing team effectively? Managing team or basically I observe the or also I have a experience, like you have to make your base first. As I Okay. observed, like we have a one of my senior, but it is my experience, but not to highlight anyone. Uh, he has the capability to leading the team, but he is not ability to do the code. You're getting my point. The like how like to lead the team, you need to know that what type of work you have to do in you with your team, or you what type of work you to delegate to the your subordinate or your to the your colleague member. The work is very important. Like we are talking about code. Okay, like you are the leader and you have to make some project for the related to HRMS. For an example, like you have to make an HRMS software for the client name is Haldiram. Okay, there's a 2000 employees you have to manage with the your software, and you have a 5 people of your team. Okay, if you have a knowledge of
code and how to write it, then you have to then you can lead your team. Until unless you have a capability to lead the team, to manage your team, but you're not having a knowledge of about the code or about the bugs or about any releases or any knowledge of Play Store, any of App Store, like somehow DevOps knowledge. If you don't have any knowledge, if you have the members of the knowledge, then you can only guide them, but you never uh, observe or help them when he's stuck in the DevOps or when he's stuck in the any coding part. Then you have a basic knowledge of the code or the DevOps, then you can lead your team or manage your team. And somehow you have to make a relation with your team also. This is a major part. If you have lead the team, you have to make a relationship with your team members. Okay, thank you, sir. What role do continuous learning and self-improvement play in your professional journey? Professional journey, like I have learned on the daily basis about the AI or like of my language. Like currently I'm saying that I have not 100% knowledge of the PHP. Like still I'm reading or self learning about on the PHP also. Like my motto is that make a base strong, then you can switch easily in any type of language, like it's also a Node or the React, because base is matters, because in all of the languages there's an array or there's a loop, nothing else. You Okay, have to create an algorithm, you have to create the code on the basis of the array or loop or any kind of background knowledge, backend knowledge. Basically you have also need the database knowledge also, right? Then every day I take my 2 hours to self learning, okay, at least 2 hours on the daily basis. okay. Okay, thank you, sir. Could you share an example of a challenging situation where staying calm helped you make the right decision? Which type of decision? Set Any an de- example. any any decision? Can you create an example for that easy to me answer? See, what Okay, Tanisha is trying to say that there are a lot of situations where you have to take decisions Correct. which have multiple implications, and there are no right or wrong answers. True. But you have to choose one option, and it has a collateral impact when you are into that decision. For example, I'll give you a very easy example, Correct. but don't use this in your answer because I've already answered it, right? Okay. No issue. For I example, will. company says that your budget for appraisal this year is only 5%, Okay. and you find that high potential people are existing in the system, they deserve 12%. So someone has to be given 12%, and someone has to be given 2%, 1%. Someone has to be not given an increment because you have to maintain a budget of 5%. Now, you as a leader has to take the decision what to do. Okay. Now, if you give everybody 5%, high potential will leave. If you give everybody, if you give 12 and 3%, 3% will leave. Definitely those people will leave whom you will not give any increment. Then Correct. you have to backfill, right? So in such kind of tricky situations, when you are in a role, because you are a product manager, Correct. your responsibility is managing the product, managing the team, managing the program. Because program management also will be eventually directly, indirectly coming under you only. Correct. Also And good lots of stuff. stakeholders are involved. SMEs are involved. SMEs think that product is running because of them. Techies think SMEs are of no good. They're unnecessary load on the company. It's we who are making the product, and they are eating the malai of the milk, right? True. And that fight continuously goes on. So Tanisha is trying to understand when you are in a conflicting situation and you have to take a decision, how do you do it? Okay. What is your style? What is your mantra? Okay. बेसिकली सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, ये तो एग्जाम्पल खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया.
ओके ये तो मेट्रो का टिकट था, ओके दिल्ली से दिलशाद गार्डन पहुंच नो इशू। गए। दूसरा। तनिषा बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली आल्सो पास्ट 3 इयर्स एगो मैं सेम सिनेरियोज में था, बट मैनेजमेंट लेवल को छोड़ के मैं टेक स्टेक पे थोड़ा सा एक एग्जांपल को इसको मोल्ड कर देता हूँ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो हाँ, बहुत सारी चीजें किसी न किसी को टारगेट हो जाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बोलो ना, ये तो Okay. ओपन Basically, फोरम है। last 2 years ago, we some stuck in the server related issues. Right? We have a two vendors. Like one of them is A and second is B, and both are working on the well node. But somehow, company is not capable to do their expenses. They are trying to cut their expenses in the term of server. Okay, one a server is take from the, for the example, 1 lakhs per month, and second one will take us 50,000 for a month. Okay, so there's a two amounts. So companies decided to cut like one server or deduct half of the amount of the server A. Okay, the decision is on the me that you have to take the decision because we are not giving the such a huge amount. Okay, I and my team member, we will sit down and everyone says, sir, हमें तो कॉस्ट बढ़ाना है और आप डिस्कस कर रहे हो कॉस्ट कम करने के लिए। और कंपनी कहीं ना कहीं मिनिमम 50,000 रुपीज कट करना चाहती है। आइदर आई हैव टू कट द सर्वर बी और आई हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्वर ए। ओके, देन वी विल डिसाइड कि जो हमारा ओरिजिन स्कोप था उसमें हमें किसने सबसे ज्यादा फैसिलिटी दी है, और जब हमने क्वेरी रेज करी तब उसका एक्सपीरियंस किसका ज्यादा बेटर था। तो समहाउ वी विल फाउंड कि सर्वर बी जो है वो ज्यादा एजाइल है काम करने के लिए हमारे साथ। सर्वर ए, अगर हम कोई टिकट रेस करते हैं, दे आर टेकिंग द 2 days, 3 days, और minimum of 8 hours. They are resolving our ticket minimum in the 8 hours. But same in scenario, server B, they are not raising any ticket. They are making their internal system or the software type of for the ticketing system. But when we call, instantly within a 15 minutes or 20 minutes, or hardly they will take the 2 hours to solve our problem. Okay, then we will discuss server B teams and we will acknowledge them that please come to our office and we have to take a decision for the real purposes. Then his CEO and his director both are coming in Noida sector 6, our office, and we'll sit down. There's not my any managing director or anything else in sitting in that meeting. I just commit them, sir, just for the 1 year or the 6 months, please increase our server configuration, but not the cost wise. Okay. Okay. But end of the meeting, they increases the 20,000 per month plus 50,000. Like now amount is the 70,000 per month. With the same configuration we are getting from the server A. Okay. Like 2 core CPU we are getting from the server B and 4 core CPU from the server A. Now server B has a 7 core CPUs. Okay, then we will migrate all the data, all the databases, all the code from the server A to the server B within I think 2 days. And after that, I write the mail to my CEO, Mr. Bhupendranath Pandey, that we will cut down the server A with the immediate effect, and we will go with the server B, and your amount will cut down. Now we have only 70,000. We will cut the amount more than 50,000. तुम तो बड़े धोखेबाज हो यार। तुम तो धोखेबाज धोखेबाज निकले। मतलब बेसिकली एम्पावरिंग द, बेसिकली अगर इसको मैं मैनेजिंग रोल में ही बात करूं तो मेरा फोकस होता है कि इंटर्न्स को या फिर जो ज्यादा एग्रेसिव है काम नहीं को नहीं, लेकर, राइट मूव, उससे आई थोड़ा वाज सा आगे जोकिंग, बढ़े। करेक्ट। आई वाज जोकिंग, इट्स यस एब्सोल्युटली राइट मूव। अब मेरा एक सवाल है, ये चीज यस, आपने पहले क्यों नहीं सोची? बिकॉज पहले या तो मेरे हाथ में डिसीजन नहीं थे या फिर हमने कभी कॉस्ट कटिंग पे डिस्कशन नहीं किया। लेटर ऑन वी विल मतलब डिस्कस ऑन बेसिकली इट डिडंट कॉस्ट। occur to you, यस it didn't occur to you. So Tanisha, to your question, यार तनिषा, पहले तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बैठो, ऐसे बैठे हो जैसे मजलूम बेचारी कोई
अत्याचार की मारी बैठी हुई है, मतलब कम ऑन। तनिषा तो डरने की तनिषा, कोई जरूरत नहीं है। if हम I लोग read सब his सेम, management सब style पेज पे। correctly, if I read his management style correctly, he believes in optimization. Karan has a style of taking a decision which optimizes the entire situation in totality, and he always keeps the interest of the organization in mind above his interest of individuals or particular factors in the organization. That answers your question? Yes, sir. Okay. थोड़ा जोर से, थोड़ा दम से। खाना तनिषा नहीं खाया? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम पेज पे हम सब। Okay, thank you, sir. How do you motivate your team members when deadlines are tough or situations are stressful? मोटिवेशन की सिर्फ बस एक ही लाइन है, काम नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ तो रात को फोन कर देना, मैं कर दूंगा। Okay. बिकॉज प्रेशर रहता है, जस्ट लाइक फॉर द एग्जाम्पल कि हमारी क्लाइंट की डिलीवरी 2 डेज में, 2 डेज के अंदर हमें एक पैच अपडेट करना है हमारे कोड के अंदर, राइट। तो जो भी क्लाइंट की डिलीवरी आती है 2 डेज, तो मैं उसका 70% अपने पास रखता हूँ और 30% आगे टीम को देता हूँ, यार मुझे 3 घंटे में पैच अपडेट करना है, करना ही करना है, नहीं तो या तो लॉस हो जाएगा या तो क्लाइंट चला जाएगा। और ये सिनेरियो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या फिर हमारे सॉफ्टवेयर पे, जो इंटरनल सॉफ्टवेयर या फिर जीरा या जो भी हम लोग यूज करते हैं, वहां पे नहीं दिखता। टीम मेंबर्स को Okay. पता होता है 3 घंटे में देना है, नहीं तो या तो ये नौकरी से निकाल देगा, नहीं तो काम चला जाएगा। अरे उसके मैं एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ करण आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। यस सर। एससीएल टेक्नोलॉजीज में ब्रिटिश टेलीकॉम प्रोसेस आ रहा था, मैं ही लेकर आया था एक्चुअली, ओके। इवेंचुअली। तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था। तो इंटरव्यू के लिए मेरा एचआर, छोटी एचआर ने इंटरव्यू लिया। उसके बाद मेरे को बोला कि आपका इंटरव्यू, हमारे कंपनी में सिस्टम है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो आपका इंटरव्यू रात को 3:30 बजे है, आप आ जाइएगा। 3:30 बजे मैं एससीएल टेक्नोलॉजीज के सेक्टर 63 वाले ऑफिस पहुंचा, टाई वाई कोट लगा के। वहां मैंने क्या देखा, पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरी कंपनी चल रही है, और टेबल के नीचे एचआर वाले सोए पड़े हैं, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआर है एपी राव, वो सबको लात मार के पता है क्या बोलता है? अबे उठो गधो, इंटरव्यू लेना है, अबे उठो इंटरव्यू लेना है, अबे उठो, चलो सारे उठो इंटरव्यू लेना है। और सारे सब अपने बाल ऐसे ऐसे करके अपना इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए। मेरे करीब 8 लोग थे इंटरव्यू लेने वाले, जिसमें वो लोग भी थे जो मेरे को रिपोर्ट करेंगे। ओके। मेरा इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट का था, और मेरे को इंटरव्यू देना था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को। तो ओके। एपी राव ने बोला कि पहले तुम लोग क्वेश्चन पूछ लो अपने बॉस से कि तुमको ये बॉस चाहिए कि नहीं। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा यही, तनिषा जैसे पूछ रही, हाउ विल यू मोटिवेट अस, हाउ विल यू टेक डिसीजंस, और मैं उनको जवाब दे रहा था। फिर एपी एपी राव ने भी मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, तुम्हारे सामने कॉन्फ्लिक्ट है कि तुमको ऑपरेशन हेड का साथ देना है, एचआर हेड का साथ देना है, किसका साथ दोगे? मैंने बोला जी किसी का भी नहीं दूंगा, सच का साथ दूंगा। ना आप मेरे सगे हो ना वो मेरा सगा है। इस तरह ट्रू। से हमारा इंटरव्यू हुआ। फिर अल्टीमेटली मेरे पास ऑफर आ गया, एंड मैंने एससीएल टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने 6 साल ओके। चलाई वो कंपनी, और ब्रिटिश टेलीकॉम को ओके। लेकर आया इंडिया। आपको पता है करण, हमारा हर महीने का रैंप अप कितना होता था? 3,500 लोगों का। ओके। 3,500 लोगों का रैंप अप, यस। और 140 लोगों की रिक्रूटमेंट टीम, जो कि मेरे को रिपोर्ट करती थी उस वक्त। ओके। इतना बड़ा ह्यूज एक नंबर। टीम मैनेज करना इतना बड़ा काम है। टीम में सबको करेक्ट। खुश रखना, उनके उनका ख्याल रखना, उनके सुख दुख में साथ देना, और उनकी परवाह करना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। वही समझ करेक्ट। सकता है जो उस रोल में है। करेक्ट। जो उस रोल में नहीं है, वो कभी समझ नहीं पाएगा इन चीजों को, बिल्कुल, समाव आपको कि टफ डिसीजन भी लेने वाइब्स क्या होती है, वाइब्स क्या होती है। करेक्ट। जो एक टीम बनती है ना, बंधती, बनती नहीं, बंधती, हाँ जी। वो मोहब्बत से बनती है, विश्वास से बनती है। ट्रू। ये सीखने में उम्र लग जाती है। बिल्कुल सर, सही तो कह रहे हैं। तनिषा, आप भी टीम बनाना फ्यूचर में, तो मोहब्बत और Okay, sir. विश्वास वाली बनाना, ईमानदारी वाली। Okay, sir. Okay, चलो, thank you, sir. शूटिंग करते रहो तनिषा, क्वेश्चन पूछो।
वो क्या कर रहा है? So, what qualities do you believe students should develop early on to succeed in leadership roles? Like which type of like he has to confident about he is learning. Like he has to develop his skills in confident way. Like in past experience, I have interviewed the 150 persons and I've selected one person. After that, my CEO says, Karan, please do not go any bunch of interview or in the colleges because you will not hire anyone. Right? You got my point. Because I not hire anyone like he is not confident. I'll only ask that please tell me your last semester course's name. There are many of students did not know about their last semester subject Yes, name, that's true. which he's learned. That he has too much confident about which is learning. I'm not talking about any code and I'm not talking about any skills. I'm not taking the questions ki please write down the star level code or the for loop or the somehow any scenarios. I'm starting my questions like please tell me about your background or tell me about your family and then tell me about your first semester subject names, right? But the Yes. students are maximum around 60 students are rejected from my side half of my interview because they are not telling about the subject name also, Okay. and they have to learn the basic things, for loop definitions. After the 4 years of BTech student, they don't have to know the for loop basic definition. They don't have tell me about the HTML tag. And now we are on standing on the Gen AI scenarios where we don't need any type of this silly type of questions asked to the student like please tell me the HTML tag name. But the students are क्या बोलूं मैं students के बारे में but they are not telling about the HTML tags. So please learn from the basic. Don't write in your resume that I know React, Python, because these are irritating to us. कि यार मैंने पढ़ा उसको Python और JS दोनों आता है. But I'm talking about the HTML tag. They don't have any HTML tag, but they have knowledge of Python. How? These Let me type tell of you how. scenarios, which is What they do is yes, resumes of Karan Sharma, they only change the name to Dhyan Chauhan, correct. and resume remains of Karan Sharma, and Dhyan Chauhan interviews them. मैंने तो यहाँ तक देखा हुआ है कि एक आदमी इंटरव्यू दे रहा है ऑनलाइन, उसके बगल में दूसरा आदमी बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर एज पॉसिबल है होता भी ऐसा बट क्या है कि जो भी आप बता रहे हो उसमें आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होना और याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अभी आप बीटेक या बीसीए से पास आउट हो रहे हो और लास्ट कोरोना के बाद 2020 और 21 एरिया के बाद अगर हम डिस्कस करें तो आईटी में रिसेशन इतनी जल्दी आया ही नहीं है आप अगर याद करें तो पहले रिसेशन हर ईयर आता था डिमांड हाई थी। नए नए बच्चे आ गए अब तो बस रिप्लेस कर देंगे जो लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए कंपनी में तनख्वाह ले रहे हैं 10-10 हजार वाला आके रिप्लेस मार देगा सही बात है। ड्राई रन किसे कहते हैं आज के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है बिकॉज दे इन्होंने स्टैक ओवरफ्लो पढ़ा ही नहीं है इन्होंने गूगल पे कभी सर्चिंग नहीं की है ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है या फिर इसको मैं प्लस पॉइंट कह दूं कि मेरी टीम सर्वाइव कर रही है नहीं तो मैं रिप्लेस कर देता तब तक टीम को हम्म। नहीं, हम लोगों ने उसका तोड़ ये निकाला है कि यस हम इम्प्रॉम्प्टू कभी भी किसी को, किसी भी क्लाइंट को करेक्ट प्रेजेंट नहीं करते। ओके वी गिव देम ए हार्ड ट्रेनिंग at their cost for at least 1 year and specific to the company. ओके And then there is no pressure on the company to take all. You take on merit. If you don't like someone, don't take it. But if you like, your call. Something like that. So that model is already being worked out in यस DSPSR. And I'm sure that will be help. That will be win-win for all, for us. Tanisha, your next question. Okay. So, what were some of the skills you had to master in your student days that are still helping you today? which type of skills I read in masters Uh,
some of the skills you have to master in your student days that are still helping you today? बेसिकली स्टूडेंट डेज की बात करूं तो मैं कुछ नहीं चाहता था कि मैं सीखूं, बट ये था, टारगेट एक ही था, पेपर पास हो जाना चाहिए। मेरे को 50 नंबर लाने हैं, क्यों? क्योंकि मेरे को 80% ग्रेड चाहिए, दैट्स इट। मेरा जो टारगेट था वो स्टार्टिंग से 2015 में, जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया था 16 में, तब भी मैं टारगेट सिर्फ एक ही था। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो डेटाबेस पे है, राइट? कि इतना बड़ा डेटाबेस होना चाहिए जिसको कोई ना संभाल पाए, बट मैं उसको डिजाइन कर पाऊँ। सिर्फ एक यही मोटिव था, जहां पर मैंने माइस्क्वेल, ऑरेकल, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेल, ये सारे डेटाबेस पढ़े हैं। हाइव पे मैंने काम किया है इन माय कॉलेज डेज। हाइव इज अ नो सीक्वल डेटाबेस। आई वर्कड ऑन माय 2018 last semester. I'm worked on the Hive, and I'm making the research paper on the Hive database. I only have a knowledge about database, nothing else, and nothing else I do in the my college days. But do fun and but clear or my exams only. Just read database because I need only one skills in my college days. Because college days में क्या आपके पास प्रेशर है, कॉलेज पेपर्स का, प्रेजेंटेशंस का, और इंटरनल वाइवा, मोस्ट ऑफ द दे आर मल्टीपल थिंग्स। बट आपको एक स्किल के साथ फोकस करना होता है, जहां पे आपको कोई एक स्किल चाहिए होती है। या फिर अगर आप स्किल्स के साथ में ना जरो, तो आपको कम से कम प्रोजेक्ट बनाना या रिसर्च में या फिर इंटर्नशिप में फोकस करना होता है। लाइक ऑफ माई स्टूडेंट, माई स्टाइल इज दिस कि फोकस ऑन द इंटर्नशिप, और टेक योर वन लैंग्वेज और वन स्किल विद यू। If I am a student, then I'm focused on my one thing. Take one language or one skill only. Else, do whatever they want. डेटाबेस ही क्यों Okay, करें, और कुछ क्यों नहीं? सर ध्यान वही था। बेसिकली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में। हम्म। आफ्टर 10th आई गो फॉर द पॉलिटेक्निक एंड डू द सिविल इंजीनियरिंग। उसके एंड बाद बीटेक किया? नहीं, उसके बाद मैंने जॉब की है 1 साल रिलायंस जियो में एज अ हम्म। ट्रबल शूटिंग इंजीनियर। 2015 से 2016 का जो ईयर था, 1 ईयर मैंने जॉब की थी। आई वाज प्लेस्ड इन झारखंड, हम्म। द कॉलेज प्लेसमेंट, एंड आई वर्कड इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द 3 months। बट मैंने मजा नहीं आया? टावर खड़ा किया, उसके बाद एक कंप्यूटर वाला बंदा आता था, बैठता था लैपटॉप लेके, और 10 मिनट में घर। मैं कहा हम्म। साला सुबह से बैठे हुए हैं और ऐसी की तैसी करा रहे हैं, लेकिन ये तो आया, 15 मिनट बैठा और चला गया। अच्छा। आफ्टर दैट आई कॉल देम कि राकेश प्लीज मुझे बताओ आप करते क्या हो, ऐसा 15 मिनट में क्या करते हो, तभी ये साइट लाइव होती है। अंटी अनलेस हम तो पूरा दिन धूप में खड़े रहते हैं। हम्म। मैंने उससे थोड़ा पर्सनल बात करी, तो उसने बता, और पता चला कि पैकेज सेम है। हम्म। वो भी उतना ही अर्न कर रहा है, मैं भी उतना ही अर्न कर रहा हूँ, तो मैं हाँ। सुबह से लेकर रात तक धूप में क्यों खड़ा हूँ? हाँ। मैं लेबर के साथ मगजमारी कर रहा हूँ, और ये मास्क आता है लगा रहे लैपटॉप हो, लेता है मास्क लगा 15 रहे हो, मिनट एरेक्ट कर रहे हो, एरेक्शन कर रहे हो, एंटीना लगा रहे हो। बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, और क्रेडिट ले जा रहा है वो कि राकेश ने साइट लाइव कर दी। हम्म। अरे भाई, साइट हमने लाइव की, हमने ईंट पत्थर जो भी सीमेंट जो भी था कंस्ट्रक्शन, हमने ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया, हम्म। आर्किटेक्ट हम थे। हम्म। तो वो लाइफ का चेंजिंग पॉइंट या ड्रॉपिंग पॉइंट कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप ज्यादा था, बट मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, मैंने वहां छोड़ दिया। तो सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में ड्रॉपिंग, और कंप्यूटर साइंस में तब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में थोड़ा माइंडसेट था। फिर मैंने अपने एक सीनियर थे ढूंढा, एक मतलब खुद ही R&D करी कि कौन यहाँ पे सीनियर है जो टीम संभालता है। हम्म। तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम थी रूम की। हम्म। मैंने कहा सर आप ऐसा करो, अपन दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने 3 BHK का फ्लैट लिया है, आप आ जाओ, मैं अकेला हम्म। रहता हूँ, 2 रूम खाली है दोनों आपके, हम्म। मेरे को तो बस रात को अपने 2 घंटे का समय दे देना। हम्म। तो हमारा एग्रीमेंट हो गया, वो मेरे रूम पे आ गया। उसके बाद वो रात को बैठ के काम करता था, मैं तो कुछ नहीं, बस गेम खेलनी है और अपना बैठे रहना है, क्योंकि अपनी तो सुबह को हम्म। नौकरी चालू होनी है, उसकी तो पूरी हम्म। रात चलनी है। मैंने कहा आप ऐसा करो, आप सो, मुझे समझाओ ये हम्म। होता क्या है। हम्म। विल टीच, एंड अराउंड 2 months हम लोगों ने सब कुछ बातचीत करी, उसने मुझे सब बैकग्राउंड का नॉलेज दे दिया। एंटीना लाइव कैसे करते हैं, नेटवर्क कैसे आता है, लैंड टू वैन कैसे ले जाते हैं, फाइबर से एयर फाइबर में कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है नेटवर्क को, ट्रबल शूट कैसे करना होता है। ही विल गाइड अराउंड आई थिंक 2 months। आफ्टर दैट मैं अपने टीम मेंबर के पास गया कि भाई मुझे रिजाइन करना है।
उसने बोला नहीं भाई मैं रिजाइन नहीं करने दूंगा। मैंने कहा मेरी टीम स्विच कर दो। जो मेरे साथ रूममेट थे उनके सीनियर को भी रिक्वेस्ट डाल दी, उसको भी रिक्वेस्ट डाल दी कि हाँ इसको काम आता है, ये कर लेगा। क्योंकि किसी को तो मैं एक तरीके से अपाइज कर ही चुका था, रात को तो वो हम्म सोता था, काम तो मैं करता था। हम्म तो बस उसने तो मुझे अपनी टीम में रखना ही था, हम्म उसने मुझे टीम में रख लिया। हम्म मैं फिर नॉक में जाके बैठने लगा। बेसिकली देयर इज अ नॉक, आपको तो पता ही होगा नॉक क्या होता है। तो एनओसी वहां पे पता हम है। लोग जाके बैठे गए। जितने भी प्रॉब्लम आए, नेटवर्क इशू, मस्त फिर समझ में आया कि यार जिंदगी यही है, एसी में बैठो आराम से, बस ट्रबल शूट करना और दो चार गाली बकनी है आगे सिविल इंजीनियर्स को कि तुमने साइट ढंग से नहीं बनाई साला, एरिया गलत है, हटाओ यहाँ से एंटीना कहीं और लगाओ, नॉक में एंगल गलत कितने है। सपोर्ट सिस्टम थे? L1 L2 L3 L4? बेसिकली देयर इज आई थिंक 5 सपोर्ट, L1 L2 L3 L4 L5। L1 L2 L3 ऑटोमेटेड होंगे। यस, L4 L5 मैनुअल थे जिनको हम लोग करते थे। बेसिकली हम्म जियो जब लॉन्च हुआ 2016 में, तो समाउ मैं भी उस टीम का मेंबर था, शाहरुख खान के साथ हम भी मिले, ब्रांड एम्बेसडर था। और जब लॉन्च हम्म हुआ 2015, तो फिर उसके बाद मेरी मदर जो राइट ऑफ मेरी तो रोल मॉडल है, तो उन्होंने बोला नहीं यार तू ऐसा कर, छोड़ दे नौकरी वोकरी। क्योंकि उनको किसी ने ज्ञान दे दिया कि यार जहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी बीटेक की या बीसीए की, वहां तो तुम्हारा लड़का पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, चाहे उसे सही कितनी बात है। नॉलेज हो। सही बात है। तो वो एक बेसिक सिनेरियो था, बट तब भी टीम वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने कहा भाई अब हम्म घर वालों ने बुलाया तो रोक तो कोई भी नहीं सकता। हम्म तो मेरे पास आज भी उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ के आ गया था कंपनी। जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में दीन धर्म एब्सकॉन्ड। तो है नहीं। एब्सकॉन्ड करेक्ट, हो गया वो। एब्सकॉन्ड कंपनी की तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन आप खुद ही भाग गए कि भैया नहीं, वही मैं वो कल कह रहा जा हूँ ना, रहा हूँ। वो रिलीविंग देते नहीं एब्सकॉन्डिंग में। करेक्ट। तो वही जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया दीन धर्म तो है ही नहीं किसी का, तो हमने भी छोड़ दी नौकरी कि यार वैसे ही मजाक में कर रहे थे एक साल, छोड़े और आ गए घर। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, बट समहाउ उस ब्रांच के अंदर एडमिशन ही नहीं हुए। सिर्फ दो बच्चों के एडमिशन हुए, एक मैं और एक कोई और। हम्म ओ तो वाइस चांसलर जो हमारे अजय जी थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, या तो आप कंप्यूटर साइंस में चले जाओ या फिर अपनी कोर ब्रांच में। मैंने कहा कोर ब्रांच में तो दोबारा सवाल ही नहीं उठता, धूप में कौन जाएगा, कंप्यूटर साइंस में चलते हैं, पढ़ना आसान होगा, पेपर आसानी से पास हो जाएंगे। सिविल में तो पास होते होते बैग लग गई, वो जिंदगी भर ऐसे ही में बैठेंगे। और जिंदगी भर वहां पे धूप में बैठना है, यहाँ पे एसी में बैठना है। हाँ। ठीक है। तो वहां पे उन्होंने एडमिशन ले लिया, और डिप्लोमा के बाद बेसिकली लेटरल एंट्री होती है, डायरेक्ट इन द थर्ड सेम। यस। थर्ड सेम मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है वहां पे, एक हमारे कंप्यूटर के दानिश सर थे, और दैट इज अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अल्फला यूनिवर्सिटी। अच्छा। ओके। एडमिशन वहां हुआ था, उन्होंने मेरे को बोला कि करण ये कोड है, इसको तुम ना सबको करके दिखाओ, क्योंकि तुमने तो डिप्लोमा पढ़ा होगा। मैंने कहा सर डिप्लोमा तो हम्म किया है, लेकिन ये नहीं पढ़ा जो आप समझा रहे हो। ना मुझे सी आती, ना मुझे सी प्लस हम्म प्लस प्लस आती। यार डिप्लोमा तो पास कैसे हो गए? पूरा डिस्कशन मेरे ही टॉपिक पे चल गया। ना उन्होंने कोड समझाया, ना उन्होंने सी समझाई। मैंने कहा ना मैंने सी 12वीं में हम्म पढ़ी है, 12वीं की नहीं है, आप मुझसे सी का हम्म, सवाल पूछ रहे हो। मुझे क्या पता प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या होता है। सही बात है। आफ्टर दैट स्ट्रगल और सारी चीजों के बाद कहीं ना कहीं बीटेक बहुत स्मूथली मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ। बट वहां पर एक स्टूडेंट था, या फिर एक तरीके से रिसर्च पेपर मान लो, या फिर मैं समहाउ रिसर्च में चला गया, जहाँ पे एक ओवेस नाम का लड़का था जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, और उसका प्लेसमेंट हो चुका था, लास्ट ईयर का बैच था वो अपना रिसर्च पेपर सिर्फ सुना रहा था, और हम लोग ऐसे फ्री हांट रहे थे। तो हमने कहा चलो सुन लेते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो वहां बैठे, और उसका जो टॉपिक था वो डेटाबेस था। ओके, दैट्स हाउ उसने जो गॉट चीजें हुक्ड इनटू समझाई इट। वो कहीं ना कहीं मुझे हिट कर गई। हम्म बस तब से मेरा था यार बस डेटाबेस सीखना है। क्यों? क्योंकि इस साले का पैकेज लगा कम से कम 12 लाख का, हम्म, अपने को तो वहीं जाना है। तो क्योंकि पैसा समझ ही गया मैं। चाहिए, अल्टीमेटली चाहिए क्या कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को हाईलाइट किया, और कुछ भी नहीं सोचा, या कोई और लैंग्वेज में मैंने स्विच नहीं किया। समाउ मुझे सी बहुत सी प्लस बढ़िया प्लस किया। के लिए मैंने कोड के रेटाफिकेशन करे, से पेपर में पास होने के लिए। फिर डेटाबेस में आगे सिर्फ स्मूथ बनाया। डेटाबेस के लेवल पे मैनेकल में मैं एज अ आर्किटेक्ट ही ज्वाइन हुआ था, इंटर्न आर्किटेक्ट बोल सकते हैं उसको। बट समहाउ हम्म उन्होंने मेरे को ट्रेन किया लैंग्वेज पे, कि यार सिर्फ डेटाबेस कुछ नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बेसिक भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर अराउंड 3 मंथ्स और द 4 मंथ्स मैक्सिमम मेरे को लगा होगा अपनी कंपनी के अंदर, मेरे पास लाइव सर्वर था, लाइव डेटाबेस था, जिसमें मैं कुछ भी आर एन डी कर सकता था। वाओ। मेरा बनाया हुआ डेटाबेस आई थिंक 2021 में लाइव हुआ। 2019 में मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, जो मैं मल्टी इंस्टांस की पहले बात कर रहा था एमसेल प्रोडक्ट की, उसका डेटाबेस मैंने रीडिजाइन किया, और 2021 में शायद वो लाइव हुआ।
I think April or January. I don't know So exact date, but here, one very important thing I want to bring in this forum, yes, please. since I work very closely in IT industry, very very closely. और कभी आपको करण दिक्कत हो, Yes, याद कर लेना, मेरा नंबर आपके ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें मेरा नंबर बिल्कुल. होगा. Pinto helicopter, anything in HR. One thing in this industry is you cannot be a generic person in today's IT industry. Correct. True. You have to be a specific guy and the best guy on that technology. Correct. And one beautiful thing about IT industry is that IC roles and management roles grow parallel. There can be a software developer whose salary is 50 lakhs per annum, and Correct. there can be a manager who is managing him whose salary is 12 lakhs per annum. True. Because in IT industry, the only requirement is the delivery. And a sharp person on a particular skill, the kind of delivery he gives, that is more valuable to an organization than manager of that organization in the IT industry. So IC roles, IC means individual contributor roles, and management roles go parallel in IT industry. And this is a particular phenomena of only IT industry. In no other company, individual contributor roles are equivalent to management roles. No industry, no company, no college. Yes. But in IT industry, individual contributor roles grow parallel with management roles. So all of the students who want to go into IT side must learn that excellence is the key to succeed in IT industry. Correct. Like what Karan has done, he has become master of database. I mean, the kind of technologies he mentioned, he has not left anything. And True. any product, the bottom of the pyramid is database only. Correct. The rest, all technologies are only intertwining it and Correct. creating a UI. UI is Yes. user interface, which means you interact with the product, right? But everything is database only. Correct. He has caught the pulse of product management. So I thought I should share with all the students in simple language. True. So Yes, Tanisha, your sir. next question. I think it's 1852. We can open the question and answer forum to audience. I mean, who is coordinating the event? Okay. Let not all the questions be asked by me. Students also should ask some questions. Okay. Thank you so much, sir, for such a wonderful session and for sharing your invaluable insights with us. Your journey is truly inspiring. Now, if anyone wants to ask any question, please go ahead. They have to raise their hand or write in the chat box. The host may allow them. Chief, raising hand का option या chat box का option आता नहीं है इसीलिए block कह करने रहा के हूँ, बाद. host should allow that. The host should allow those options. Sir, Karan, I have a question. hand I raise really option is appreciate. allowed, sir. Hello. Please go ahead. Please go ahead. Karan, I really appreciate your commitment and your way of rising from step. From a diploma holder in civil engineer, you are a boss in database management. But I'm asking you a difficult question. Correct. 2 or 3 meetings ago, one very senior professional was saying that the movement of AI is in a direction where the role of database management professionals itself will not be that relevant. So, what is your comment on that, and how you are going to tackle that? Basically, as my experience, AI never take the job or any architect of the database, because if you are working on the field or in the company's customization problems, there's a specific problem related to the database, like to manage the data within a fraction of second. AI helps you to develop these things with the help of language to present the data in the fraction of second, but he never commit you that this data directly
come in the fraction of second or the 2 second or the 3 second. You have to normalize this data. AI is work on the standard position or the preposition or the same workflow. But as of my experience, AI will help us and assist us. He will never come on our head or on the top of us, because the somehow India journey or the India industry journey, there is a some of word is not telling to us, but somehow I tell that the जुगाड़ जो आपको डेटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकते हो आप, अगर आप एक डेटाबेस आर्किटेक्ट अच्छे हो तो, अगर आप एआई के हेल्प से उसको करते हो तो कहीं ना कहीं वो अलाउ ही नहीं करेगा या आपको उस सॉल्यूशन की तरफ कारगर ही नहीं करेगा. Good. I really appreciate your passion and your commitment to this thing. My best wishes to you. Thank you. Anyone else? Any question? Can we confirm if the host has enabled everybody to raise the hand or put something on chat box? Because The my host may experience has been that confirm whether you have allowed or not. Arun is there on the call? Raised hand option Yes, is sir. enabled. He's Okay. saying Enabled, sir. raised. Raise hand enabled, sir. Okay. Hmm. So anybody in the audience, if you have any question from a very practical person like Karan Sharma, self-made man. Okay. Now the session has come to an end. Ms. Sannu, please give vote of thanks. We are truly grateful for the presence of both our distinguished speaker and our moderator. Your valuable insight have made this session highly meaningful for us all. On behalf of DSPSR, I sincerely thanks Mr. Karan Sharma sir for sharing his valuable time and knowledge with us, and Mr. Tanisha for moderating this session so well. My gratitude also goes to our respected distinguished faculty members and students for making this event successful. Thank you all and have a wonderful event ahead. Thank you, Danu. Okay. Thank you, Karan, for coming. Thank you, Karan. It Thank you, was sir. great. Thanks a lot. Heart to heart talks.